Nadia, Nadia, Gaur Nityananda Mahajan, Pratiyatena Mukta Jivera Kara. Samasara kare chare anacha, Krishna samsara kare chare anacha, Jivedaya Krishna nam sarva dharmasa, Jivedaya Krishna nam sarva dharmasa. Nadia, Nadia, Goswami, Nityananda Mahajan, Pratiyatena Mukta Jivera Kara. Sradavanjan hai, Sradavanjan hai, Sradavanjan hai, Sradavanjan hai. Nadia, Nadia, Goswami, Nityananda Mahajan, Pratiyatena Mukta Jivera Kara. Goswami, Nityananda Mahajan, Jivera Kara, Jivera Kara. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Rukmini Dwarkadhish, Rukmini Dwarkadhish, Rukmini Dwarkadhish, Jaya Rukmini Dwarkadhish. Jaya Gauranidhai, 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 Jaya Gauranidhai. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Jai Shri Rukmini Dwarkadhish ki, Shri Gaur Nidai ki, Shri Prabhupada ki. Jai Jai Sri Caitanya, Jai Nityananda, Jai Advaita Chandra, Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jai Jai Sri Caitanya, Jai Nityananda, Jai Advaita Chandra, Jaya Gaur Bhakta Vrinda. Jai Jai Sri Caitanya, Jai Nityananda, Jaya Advaita Chandra, Jaya Gaur Bhakta Vrinda.
Hare Krishna. So I'd like to welcome you all to our class today, this morning. आज प्रातःकालीन इस कथा के सत्र में समस्त प्रकार के स्वागत है। Vande Shri Krishna Caitanya Nityananda Sahajito Gaudodaye Pushpavanto Chitro Sando Tamonudo. Kam karati vachanam pangam langaite girim yatkripātamaham vande Shri Guru Dinataranam Mama jnanatimirandasya jnananjana salakaya chakshurunmritam yena tasmai Shri Gurave namaha. Namo Vishnupadaya Krishna Pristhaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunyavari Vasatyadi Sutarine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare. So we offer respectful obeisances to Sri Krishna Chaitanya and Nityananda Prabhu. हम सब मिलकर श्री चैतन्य महाप्रभु श्री नित्यानंद के चरणों में सादर प्रणाम करते हैं। Saha Udito, they both has arisen at the same time. जो सह उदित हुआ था, दोनों एक साथ जिनका उदय हुआ है क्षितिज में। And they are like the sun and the moon. और श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद की तुलना यहाँ पर सूर्य और चंद्र से की गई है। Normally the sun and the moon, they don't rise at the same time. साधारण तौर पर सूर्य और चंद्र का उदय एक साथ नहीं होता। But here they are both rising at the same time. परंतु यहाँ पर दोनों का उदय एक साथ हुआ है। Sometimes Nityananda Prabhu is considered the moon, sometimes is considered the sun, sometimes Mahaprabhu is considered the moon, sometimes is considered to be the sun. कभी-कभी नित्यानंद प्रभु की तुलना चंद्र से की जाती है, कभी नित्यानंद प्रभु की तुलना सूर्य से की जाती है। उसी प्रकार कभी श्री चैतन्य महाप्रभु की तुलना चंद्र से और कभी सूर्य से की जाती है। And we see the plow and the flute. Plow and the flute, they are not compatible objects. और नित्यानंद बलराम जी के हल को धारण करते हैं और श्री कृष्ण मुरली को धारण करते हैं। मुरली और हल वे का सामंजस्य वैसे नहीं रहता है। If you say pen and notebook, that's okay, they match. जैसे मान लीजिए कलम है और पुस्तक है, तो यह दोनों का मेल बनता है। Or spoon and plates match. और चम्मच और थाली का मेल बनता है। But here is a plow and a flute. परंतु एक तरफ हल है, दूसरी तरफ मुरली है। How do you match them? But yet it can be matched because Lord Balaram is plowing the heart. तो कैसे इनका मेल हो सकता है? बलराम जी हल को धारण करते हैं, वो हमारे हृदय को उपजाऊ बनाते हैं। And removing all the weeds. और हमारे हृदय के अवांछित
पौधे हैं उनका उनका नाश करते हैं बलराम जी। And then we can hear the sound of the flute of Krishna. और उस समय पे हम हृदय सब अवांछित पौधों से अवांछित अनर्थों से मुक्त हो जाता है, तो हम श्री कृष्ण की मुरली की माधुर्य को सुन सकते हैं। So here, Saha Udito, Sahodito mean they have appeared simultaneously. तो यहाँ पर कविराज गोस्वामी सह उदित शब्द कह रहे हैं, इसका अर्थ है कि दोनों का उदय एक साथ हुआ है। On the horizons of Goda days, Goda देश रुक्मिणी क्षितिज में यह दोनों सूर्य चंद्र के समान उदित हुए हैं। For what? Chitro Sando Tamonudo, to dissipate the darkness of ignorance. तमोनुदो अर्थात अज्ञान अविद्या अंधकार नाश करने के लिए वे अवतरित हुए। And to bestow upon all. और समस्त भक्तों पर अपना कृपा आशीर्वाद बरसाने के लिए। And Prabhupada explained this world is the world of dark well, is a dark well of ignorance, material world. और श्री प्रभुपाद वहाँ पर ठाकुर बताते ये भौतिक जगत जो है अंधकार में जगत है। So the people must take shelter of the lotus feet of Gauranitai. और इस अंधकार से मुक्त होने के लिए जीवों को कलयुग में श्री गौरनिताई के चरणों में आश्रय लेना चाहिए। And without their mercy, all our attempts, simply attempting to get out of this material world will be insufficient. और श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में आश्रय लेना समस्त प्रकार के प्रयास इस भवबंधन से मुक्त होने के असफल रहेंगे। And Sri Chaitanya Mahaprabhu, wherever he would go, he would transform everyone. Wherever he goes, he transforms everybody. श्री चैतन्य महाप्रभु जहाँ भी जाते सभी को परिवर्तित कर देते। One time he went to this Kurma Chitra, South India. एक समय श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत यात्रा करते समय कुरुम क्षेत्र पहुँचे। And there was a Brahmana, और वहाँ पर एक ब्राह्मण, Kurma Brahmana, yeah? जिसका नाम कुरुम ब्राह्मण के नाम से जाना जाता है। So he had received Gauranga Mahaprabhu home, washing his feet, worshipping him, and also feeding prasadam. उस कुरुम ब्राह्मण ने श्री चैतन्य महाप्रभु अपने घर में आतिथ्य किया, उनके चरणों में पाद प्रसादन किया, उनकी पूजा अर्चना की और उन्हें प्रसाद अर्पण किया। And the Brahmana was so satisfied to have to receive Gauranga Mahaprabhu at home. श्री चैतन्य महाप्रभु अपने घर में इस तरह से आतिथ्य देकर ब्राह्मण का हृदय संतुष्ट हो गया। And then Mahaprabhu at the end is about to leave and go ahead. और फिर श्री चैतन्य महाप्रभु अंततः जब उस घर से आगे प्रस्थान करने लगे, And the Brahmana said, "Hey Mahaprabhu, please take me with you. I want to come with you." और तुरंत उस कुरुम ब्राह्मण ने कहा, हे महाप्रभु, कृपया मुझे अपने साथ लेकर चले, मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूँ। I am suffering in this world. I am drowning in this Vishaya Tarangini. I am just getting drowned in this world. मैं इस भौतिक जगत की विषय रूपी तरंगों से सदैव कष्ट प्राप्त कर रहा हूँ। Please take me with you. कृपया मुझे अपने सानिध्य में अपने साथ लेकर चले। And Mahaprabhu said, "No, you are grihastha, you have family, you have to take care." और तब महाप्रभु ने कहा, नहीं, तुम्हें गृहस्थ हो, तुम्हारा परिवार है और तुम्हें अपने परिवार की देखभाल भी करनी है। But if you want to get out of these clutches of material existence, suffering of this world, यदि तुम इस भौतिक जगत की इस विषय रूपी तरंगों से, इसके प्रभाव से मुक्त होना चाहते हो, अपने ग्रस्त जीवन में रहकर भी Yare deke tareka Sri Krishna Upadesh. Wherever you go, whoever you meet, tell them about Krishna. जहाँ भी तुम जाओ, जिस किसी से तुम मिलो, सभी को तुम सदैव श्री कृष्ण के विषय में कहो। So this is a very good technique, principle for getting out of these clutches of material existence.
तो यह बहुत सुंदर पद्धति है यदि कोई संसार के विषय रंगों से के प्रभाव से मुक्त होना चाहता है। Especially for grihasthas who are also involved in family विशेष रूप से affairs. गृहस्थों के लिए जो पारिवारिक जीवन में उलझे रहते हैं। So, yes, Chaitanya Mahaprabhu, he gave this message, Krishna Upadesh. तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने संदेश दिया वह है कृष्ण उपदेश। And coming to Varanasi, which is a base for the Mayavadis sannyasi. और आगे चलकर महाप्रभु जो वाराणसी में है जो मायावादियों का गढ़ था। And there was no need for Mahaprabhu to go there, but he also wanted to deliver them. व्यक्तियों से महाप्रभु ने जाना था परंतु फिर भी महाप्रभु उनका उद्धार करना चाहते थे। Sri Prabhupada Pranam Mantra. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesa Sunyavari Paschatya Desatarine. Means that Nirvishesa Paschatya, the Western, full of Nirvishesa and Sunyavari Paschatya Desa Tarine is gone there to deliver them. तो शिल प्रभुपाद के कहते हैं कि शिल प्रभुपाद पाश्चात्य जगत में प्रमुख रूप से जो निर्विशेष मायावाद शून्यवाद से जो प्रभावित थे उन लोगों का उद्धार करने के लिए। So when he came to Varanasi, especially the Brahman, the sannyasi, Mayavadi sannyasi, they were criticizing Gauranga Mahaprabhu. तो प्रमुख रूप से महाप्रभु वाराणसी में उन मायावादी सन्यासी को उद्धार करने के लिए जो श्री चैतन्य महाप्रभु की आलोचना कर रहे थे। So then one Maharashtrian Brahmana could not tolerate that, and he wanted to have a meeting with the sannyasis and Mahaprabhu. तो एक महाराष्ट्र ब्राह्मण वाराणसी में रहता था, उसने जब देखा कि मायावादी सन्यासी महाप्रभु की निंदा कर रहे, वह इस बात को सहन नहीं कर पाया और वह चाहता था कि श्री चैतन्य महाप्रभु उन मायावादी सन्यासियों से मिले। And there was an invitation, Mahaprabhu went, but he was sitting the place where they washed the feet. तो जब आमंत्रण दिया गया तब श्री चैतन्य महाप्रभु मायावादी सन्यासियों के समक्ष पहुंचे, परंतु उन्होंने बहुत ही जहाँ पर सभी लोग अपने पैरों को धोते हैं उस स्थान पर सबसे बाहर बैठे रहे श्री चैतन्य महाप्रभु। And while you're sitting there, please come with us. You're Narayan. और वहाँ पर जो उन समस्त मायावादी सन्यासी ने देखा, चैतन्य महाप्रभु तुरंत कहा कि आप ऐसे निम्न स्थान पर नीचे क्यों बैठे हो? आप तो सन्यासी, आप तो साक्षात नारायण हो। And Mahaprabhu so humble, saying, I'm not qualified to be sitting with you. परंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने दैन्यता का प्रकाश किया और कहा कि मैं तो अयोग्य हूँ, अपात्र हूँ, मैं यहाँ पर बैठने के योग्य नहीं। And there was discussion. और तब वहाँ आगे चलकर प्रकाशन सचिव के साथ महाप्रभु का संवाद हुआ। So they said that you took initiation in our sampradaya, you're a sannyasi, you're supposed to be studying Vedanta. और फिर प्रकाशन सचिव कहते हैं तुमने हमारी परंपरा में संन्यास ग्रहण किया है और वास्तविक सन्यासी करते हुए उसने वेदांत का अध्ययन करना चाहिए। So instead of studying Vedanta, what you're doing, you are associating with fanatics. You're associating fanatics with fanatics. और तुम वेदांत का दर्शन का अध्ययन करने के बजाय जो कट्टरवादी उनका सानिध्य कर रहे हो। So you should study Vedanta. Why are you associating with sentimentalist people or fanatics? You should be studying Vedanta. तो तुम भावुक लोगों के साथ नाचते रहते हो, तुम्हें तो वेदों का अध्ययन करना चाहिए, वेदांत का अध्ययन करना चाहिए। Sometimes people also telling us, what kind of dharma you're following? Is going on the street and chant? What is this? कई बार कुछ लोग भी हरे कृष्ण भक्त आलोचना करते कहते ये कौन सा धर्म होता है रास्ते के ऊपर हाथ ऊपर करके नाचते रहते भावुक की तरह। Right?
Can't you join another better religion? People say, can't you join another a better one? You're dancing like pagal on the street. So, and Chaitanya Mahaprabhu said, he said, yeah, this is what happened. My Gurudev told me that I am a fool. I cannot understand Vedanta. You don't have a adhikar. So then he gave me the verse, Hare Nama, Hare Nam eva kevalam, kalo nasteva gati anyatha. So that's the verse he gave me, and he told me this is from the Shastra, and he gave me the Mahamantra to chant. So when Mahaprabhu recited this verse, Hare Nam eva kevalam, the Mayavadi sannyasis, they could not deny that, because they know this verse also, they knew. महाप्रभु ने ये श्लोक कहा हरे नाम केवलम, जब मायावादी सन्यासी ने श्लोक सुना तो इसका खंडन नहीं कर पाए, क्योंकि जानते थे यह शास्त्र में निर्देशित कली की एक विधि है. They were great scholar, so they know. वे सबके बड़े-बड़े शास्त्र के विद्वान थे, वे जानते थे श्लोक को. So they could not deny it. और वो उसका खंडन नहीं कर सकते थे. But they cannot say it also, because that will be against their philosophy. परंतु वो कह भी नहीं सकते थे, क्योंकि उनकी जो शिक्षा और उनके जो सिद्धांत है उसके विपरीत होता. Got it? They cannot deny and they cannot recite also. वो उसका खंडन भी नहीं कर रहे थे, परंतु उसका अनुमोदन भी नहीं कर रहे थे. Because they were great scholars, so they know that verse. क्योंकि वो शुष्क तार्किक ज्ञानी थे. And if they would tell that verse, if they would say, they would recite that verse, that will be against their philosophy. And then they said, okay, you're chanting, fine. But why are you dancing then? And then Mahaprabhu said, yes, this is what happened to me. I went to my Gurudev. Gurudev, what kind of mantra you gave me? Kiba mantra dila, Goswami, Kiba balabal, japite, karila, pagal. So I'm chanting this mantra. What kind of mantra you have given? When I'm chanting, I'm becoming pagal. This is the result, my dear son. Gurudev said, this is the result, my dear son. And then he quotes evidence from Bhagavatam by Prahlad Maharaj, one who became Krishna conscious, chanting the names of Krishna, of the Lord, Nrityati, Roditi, Nrityati, Hashyati. Rodit starts crying, Hashyati, laughing, and Roditi, crying, Hashyati, laughing, Nrityati, and start dancing. श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने गुरु महाराज उद्धृत श्रीमद् भागवत एकादश श्लोक को बताया, जहाँ पर बताया गया है कि भगवान नाम का उच्चारण करके प्रेम जागृत हो जाता है, तो व्यक्ति लोक लाज को स्मरण करके शरीर को सुदबुद्ध किए कभी हंसता है, कभी रोता है, और कभी उच्च स्वर में गायन करता है, और कभी नृत्य करता है.
So this is a pagal. This is the pagal state. तो यह वास्तविक उन्माद की अवस्था है भगवान नाम की कीर्तन में। In this world, everyone is pagal, right? वास्तविक देखा है इस जगत में सब के सब पागल भरे हुए हैं। Right? If not after Krishna, then you have pagal after Maya. यदि आप श्री कृष्ण के पागल हैं तो आप माया के लिए पागल हैं। Yeah. Now this war is going on, fighting. अब चारों तरफ आप देख रहे हैं कि युद्ध चल रहा है, लड़ाई हो रही है। Is not pagal? निश्चित रूप से वे सब भी पागल ही तो हैं। They have built big cities, big building. Now they are destroying. उन्होंने इतने मेहनत करके कठोर परिश्रम से बड़ी इमारतें बनाई और वो एक दूसरी इमारतों को तोड़ने में लगे हुए। This is Mahapagal. महापागल है। This body is been given. It is meant to be burned after when somebody died. But now they are burning the body. They are smoking and drinking alcohol. तो यह शरीर तो अंततः जलकर खाकी होने वाला है, परंतु मूर्खतापूर्ण जो नशापान आदि करते हैं, धूम्रपान करते हैं, वे अपने शरीर को अंदर से ऐसे ही जलाते रहते हैं जीवित अवस्था में। This is also pagal. यह भी तो पागलपन ही है। Right? One time Guru Maharaja was saying, Loknath Maharaj was saying, he was giving class, there was a boy who came and he was sitting on the side. तो महाराज जी एक समय मेरे प्रवचन बता रहे थे कि एक युवक वहाँ पर आकर बैठ गया जहाँ पर महाराज जी क्लास दे रहे थे। And he was wearing these stone jeans with holes in it. और वो आजकल की जींस पैंट होती है जिसमें दुनिया भर की छेद होते हैं, फटी फूटी वो वैसी फटी जींस पहनी थी। Guru Maharaj did not know about it, about this is fashion. Maharaj. और तो महाराज को पता नहीं था कि ये शायद कोई फैशन भी होती है फटी हुई जींस पहनना। Maharaj said, you know, your jean is torn, you should get a good one. तो फिर महाराज कह रहे हैं तुम्हारी जींस से फटी हुई अच्छी नई जींस खरीद कर पहनो। And the boy said, no, Maharaj, this is new. अब फिर वो युवक कहने लगा महाराज जी तो एकदम नई जींस है मेरी। And they say the torn one is more expensive than the good one. और कहा जाता है कि फटी हुई जींस की ज़्यादा कीमत होती है, महंगी होती है बिना फटी हुई जींस के। फाड़ने के भी अधिक पैसे देते हैं। So the world is becoming ulta, right? पूरी दुनिया उल्टी-पुल्टी हो रही है। So this is all pagal. Pagala and pagli. So here Mahaprabhu is saying that, Ishwar Puri is saying, yes, this is the result of और वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु के गुरु महाराज श्रीपाद ईश्वर पुरी कहते हैं वास्तविक ऐसा ही तो परिणाम इस हरे कृष्ण कीर्तन से होना चाहिए। So if then the Mayavadi sannyasi said, okay, you're chanting, you're dancing, fine, but why don't you read Vedanta? और तब वो सन्यासी ने कहा कि ठीक है, अब हम स्वीकार करते हैं कि ठीक है तुम कीर्तन कर रहे हो, हमने स्वीकार किया कि तुम नृत्य कर रहे हो, परंतु तुम वेदांत का अध्ययन क्यों नहीं करते? And then Mahaprabhu said, Vedanta is fine, Vedanta is perfect, Vedanta is like the sunshine. और तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा वेदांत को पढ़ने में कोई आपत्ति नहीं है, वेदांत तो पूर्ण है, वेदांत तो सूर्य के समान प्रकाशमान है। But your Mayavadi interpretations are like the dark clouds covering the sunshine. परंतु आपके द्वारा ये जो मायावाद भाष्य किया जा रहा है, वेदांत का गलत अर्थ निकाला जा रहा है, यह उस सूर्य के ऊपर काले बादल के समान आवरण है। Mayavadi interpretation, they always give interpretation, commentary. तो मायावाद लोग हैं वहाँ गलत प्रकार का अर्थ वेदांत का बताते हैं। Like they would say for the Kurukshetra, they would say this body is like Kurukshetra. Kurukshetra war didn't exist. और जब कहा जाता है कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ, तो वे लोग कहते हैं कि कुरुक्षेत्र मतलब हमारा शरीर ही है, वास्तविक कुरुक्षेत्र भूमि नहीं थी, ऐसा इस तरह का वो गलत अर्थ निकालते हैं। So they would give interpretation. तो ऐसे ही कुछ विपरीत अर्थ दे देते हैं। So that's like Sarvabhauma Bhattacharya also. He was very, very kathor, strong.
cold-hearted Mayavads, Sarvabhauma. और ऐसे ही हम उदाहरण देखते हैं जगन्नाथ पुरी में सार्वभौम भट्टाचार्य थे, वे भी कट्टर मायावादी थे। He was trying to explain Vedanta to Chaitanya Mahaprabhu. और वहीं वहाँ पर हम देखते हैं कि जगन्नाथपुरी में भी सार्वभौम भट्टाचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु को वेदांत की शिक्षा देने का प्रयास कर रहे And थे। for 7 days he'd be listening. और श्री चैतन्य महाप्रभु सामने बैठाकर सार्वभौम भट्टाचार्य 7 दिनों तक वेदांत की चर्चा करते रहे। You're not asking any question, you're just listening quiet. और 7 दिन तक निरंतर जब वेदांत की चर्चा अंततः सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु से पूछते हैं, अरे तुमको समझ में आया कि नहीं, तुम प्रश्न नहीं पूछ रहे हो? Yes, because I did not understand anything. I could not understand your explanation, what you're saying. तब श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, वेदांत तो मुझे समझ में आ रहा है, परंतु वेदांत का जो आप अर्थ बता रहे हैं वो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। So Vedanta means the conclusion of knowledge. तो वेदांत का अर्थ है वेद का अंत, मतलब वैदिक शास्त्र का अंतिम निष्कर्ष, उसे वेदांत कहते हैं। Vedanta Sutra means it's given in sutra form. और वेदांत सूत्र कहा जाता है क्योंकि उस सूत्र रूप में संक्षिप्त में दिया गया है। But the commentary of the Mayavadis are like the dark cloud covering the real meaning of Vedanta. वहाँ पर महाप्रभु कहते हैं कि मायावादी के द्वारा जो अर्थ निकाला गया है वह उस सूर्य रूपी वेदांत के ऊपर काले बादल के समान आवरण है। And for the Mayavadis, liberation is the highest achievement. और मायावादियों के लिए मुक्ति को ही वो सर्वोच्च उपलब्धि और अंतिम लक्ष्य मानते हैं। But Mahaprabhu has proven him wrong. और फिर श्री चैतन्य महाप्रभु ने सिद्ध करके दिखाया कि यह जो अर्थ है ये गलत है। Atmaramascha munayo nirgrante api urukrame. He's saying that even after liberation, liberated soul becomes attracted to devotional service to the lotus feet of the Lord. और श्रीमद् भागवत के श्लोक का उदाहरण देते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु बताया कैसे जो मुक्ति भी प्राप्त कर चुके मुक्त जीव है वे भी भगवान की प्रेममय भक्ति सेवा की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। We have the example of Sukadeva Goswami, who was also an impersonalist before. He was Brahmavadis, and the 4 Kumaras, although they were liberated, but they became attracted to the lotus feet of service to the lotus feet of the Lord. और वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु उदाहरण देते हैं इस तरह से सुखदेव गोस्वामी चतुष्कुमार आदि ब्रह्मवादी मुक्त पुरुष थे, वे भी भगवान के रूप गुण का श्रवण करके उनकी वजह आकर्षित हो गए। It means liberation is not the highest. Bhakti इसी is से the यह highest. निष्कर्ष निकलता है कि मुक्ति सर्वश्रेष्ठ नहीं है, मुक्ति तो गौण है और भक्ति श्रेष्ठ है। Mokshalabhuta Krit. Right? Mokshalabhuta Krit means this Mukti Devi becomes the servant of the devotees. विशुद्ध भक्ति के लक्षणों में एक लक्षण बताया गया मोक्ष लघुदाकर, अर्थात मुक्ति देवी जो है वह भक्तों की दासी बनती है। Coming to the devotees, any service for me? और वह मुक्ति देवी द्वार पर खड़ी होकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है भक्तों से, कृपया मुझे भी अपनी सेवा का अवसर प्रदान कीजिए। You know, just like Rupa Goswami, he wrote a book, and Vallabhacharya came to edit his book. और श्री रूप गोस्वामी जब अपने ग्रंथ की रचना कर रहे थे उस समय वल्लभाचार्य वहां पर आए और वल्लभाचार्य ने उस ग्रंथ में कुछ सुधार करने का प्रयास किया। And Jiva Goswami was there. He said, Vallabhacharya said, there's a mistake here. I have to correct this mistake. और वहां पर वल्लभाचार्य ने श्री रूप गोस्वामी को बताते आपने जो ग्रंथ लिखा है इसमें ये गलती है, इसको सुधारना होगा। And Jiva Goswami said, which mistake? My Gurudev doesn't make any mistake. जीव गोस्वामी जब सुना उन्होंने कहा कि क्या गलती है? कोई गलती नहीं है। He said, he's describing Mukti as Pisacha, right? As dying. So this is Shastra. रूप गोस्वामी
मुक्ति को पिशाचिनी से उसकी तुलना की गई है। पिशाचिनी का डायन, उन्हें ये शब्द ठीक नहीं लगा वल्लभाचार्य। Because Shastra also glorify mukti. क्योंकि शास्त्र में कुछ स्थानों पर मुक्ति की भी प्रशंसा की गई है। But he's saying dying. परंतु वहाँ पर रूप गोस्वामी में मुक्ति को पिशाचिनी कहते हैं। But then Jiva Goswami defeated Vallabhacharya. He said, you got it wrong. Rupa Goswami's writing is mukti is not pisacha, but the desire to achieve mukti, that is pisacha. और वहाँ पर फिर जीव गोस्वामी जब वल्लभाचार्य इस तरह से गलती बता रहे थे रूप गोस्वामी को, तो जीव गोस्वामी ने इसका खंडन किया और बताया कि रूप गोस्वामी वास्तव में क्या कह रहे हैं। मुक्ति को पिशाचिनी नहीं कहा गया है, मुक्ति की इच्छा को पिशाचिनी कहा गया है। And then Vallabhacharya said, I cannot continue. I leave the place. He was defeated just by a small boy, Jiva Goswami. But even Sarvabhaumacharya, he, after hearing Chaitanya Mahaprabhu's explanation, he was completely transformed. He became Vaishnava. But Sarvabhaumacharya. और हम वहाँ देखते हैं जगन्नाथ में सार्वभौमाचार्य जो कट्टर मायावादी थे, जब उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु की आत्मा व्याख्या को सुना तो पूर्णतः वे परिवर्तित हो गए। He was a pakka, kathor mayavad brahmana. और बहुत ही कठोर कट्टर मायावादी थे। So he is transformed so much so that one day Chaitanya Mahaprabhu came to his house in the early morning and offered him Jagannath Prasad. और वहाँ पर बताया जाए इतने वो परम वैष्णव बन गए, आगे चलकर एक दिन प्रातः काल जैसे भी आपको उसी समय श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी का महाप्रसाद लेकर सार्वभौम भट्टाचार्य के घर पर आए। And Sarvabhaumacharya has not taken his bath yet. सार्वभौम भट्टाचार्य तो आचमन भी नहीं किया, स्नान भी नहीं, कुछ भी नहीं किया। He saw Mahaprasad, he just chup. Yet, and Mahaprabhu was smiling. See, he was a Kathor Brahmana, Mayavad. He would do all the rituals. Yes, same Sarvabhauma is just honoring this Mahaprasadam. और ये वही सार्वभौम है जो बहुत ब्राह्मण दुनिया भर की नीति नियम रखता था, और बहुत तुरंत बिस्तर से उठते बराबर जगन्नाथ जी के प्रसाद को आदर के साथ ग्रहण कर रहा है। And Sarvabhaumacharya said, yes, I have read from the Puranas, when Mahaprasad come, immediately we should honor. और फिर तुरंत वहाँ पर सार्वभौम भट्टाचार्य पुराणों का श्लोक उद्धरण देके कहने लगे, जब जगन्नाथ जी का महाप्रसाद आपके सामने आता है, उसी क्षण आपने तुरंत उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। Even if it is dry, even if it is coming from a long distance, we should honor. So this is a transformation of Sarvabhaumacharya. He even changed a word from the Bhagavatam. और यहाँ तक कि भागवत में उन्होंने एक शब्द को जैसे पढ़ा तो उस शब्द को परिवर्तित करने के लिए तत्ते नुकंपम समीक्षमानो गुंजा एवात्मा कृतं विपाकम. And then this is word, the last line it is saying muktipade. Jive sadaya bhakti. Muktipade. So he has changed the word muktipade, he has put Bhakti Pade. तो ब्रह्मा जी की श्लोक है जिसमें ब्रह्मा जी स्तुति करते हुए इस शब्द को वहाँ प्रयोग किए मुक्ति पदे। सार्वभौम भट्टाचार्य जैसे श्लोक पढ़ा तुरंत उन्होंने श्लोक के शब्द को बदल दिया और कहा कि मुक्ति पद की जगह भक्ति पद होना चाहिए। Mahaprabhu said, what did you do? This is not fair because this is Bhagavad, this is Shastra. You are not allowed to change the word of Shastra. Since I've become Vaishnava, I hate the word mukti.
फिर सार्वभौम भट्टाचार्य कहेंगे जब से मैं वैष्णव बन गया हूँ मैं मुक्ति शब्द से नफरत करता हूँ because mukti convey envy. वास्तविक मुक्ति अगर देखा जाए तो वो भगवान के प्रति सूक्ष्म ईर्ष्या भावना को प्रकाशित करती है। And Mahaprabhu said, no, Shastra glorify mukti. Krishna's name is Mukunda, the giver of mukti. And महाप्रभु ने कहा कि शास्त्र में तो मुक्ति की महिमा को गाया गया है। स्वयं भगवान का एक नाम मुकुंद है, जो मुक्ति दिखाता है। And mukti is also one of the subject matter of Srimad Bhagavatam. और भागवत के 10 विषयों से एक विषय मुक्ति भी है। And Sarvabhaumacharya said, yeah, you may have your own explanation, but I hear the word mukti. और फिर सार्वभौम भट्टाचार्य ने तुमको जो व्याख्या देनी तुम दे दे और परंतु मैं मुक्ति शब्द से नफरत करता हूँ। Gopinath Acharya, the brother-in-law of Sarvabhaumacharya, said to Mahaprabhu, the fact that you have transformed Sarvabhauma, and Sarvabhauma, he was like stone-hearted. No one could actually transform him. But you have been able to transform him, to change him. और वहाँ पर गोपीनाथ आचार्य ने भाई के सार्वभौम भट्टाचार्य के उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु से कहा कि वास्तविक सार्वभौम भट्टाचार्य बहुत ही कट्टर थे शास्त्र के नियमों में और मायावाद में, उनको आपने परिवर्तित कर दिया, उसका यह ज्वलंत उदाहरण है। What Shruti and Smriti, the Puranas, are there any relationship? Because they are the organic whole. Sometimes it is seen that there are differences of opinion. तो श्रुति होती है, स्मृति होती है, पुराण होते हैं, वास्तविक देखा जाए सार्वभौम रूप से सभी एक ही है और कभी-कभी परंतु भिन्न प्रतीत होते हैं। Is there unity between the Puranas and the Vedas? पुराण के वेद में क्या साम्य है? Yes or no? हाँ या ना? Unity. Why the Vedas? पुराण वेद सब कुछ हाँ कह रहे, कुछ ना कह रहे। No. एक ना कह रहे, कुछ हाँ कह रहे। Some differences. जैसे पुराण को कह के चलते हैं। What are the differences? क्या अंतर है? वेदों में जो फिलॉसफी सिद्धांत है, उसी को व्यासदेव ने कथाओं के रूप में सामान्य जनता के लिए प्रकट किया है। लेकिन तो वेदों की जो भाषा है थोड़ी कठिन है समझने के लिए। तो लेकिन पुराण की जो भाषा है सामान्य जनता से समझ सकती है। और तत्व से देखा जाए तो सबका सार एक ही है कि कृष्ण के चरणों में सब समर्पित होना चाहिए, विष्णु सब कुछ है, पर रस की दृष्टि से देखा जाए तो फिर होता है। सर्वोच्च रस की दृष्टि से देखा जाए Yes, very good. But some say that the Shrutis are more important. And Smriti, Shruti means heard, right? That's what is heard. श्रुति मतलब वेद, तो कुछ लोग होते हैं वेद श्रुति को अधिक महत्व देते हैं और स्मृति मतलब पुराण आदि को कम समझते हैं। Then if people say, okay, the Shrutis are original, this Smriti has been written by human. श्रुति जो है वो ओरिजिनल है और स्मृति तो बाद में रचना की गई है। What do we say now? They would say, Mayavadi would say this is Smriti. मायावादी तो इसी प्रकार से कहते हैं, वेद को ही मानते हैं, वेद की पढ़ाई को वो श्रेष्ठ मानते हैं। So they believe in Shruti because Shruti is given by God. It's not written. Shruti is not written. Just like the Jiva. लिखी नहीं गई है, श्रुति
the jiva are not created, they are eternal. Similarly, जैसे जीव की सृष्टि नहीं है, जीव तो शाश्वत है, वैसे ही वेद भी शाश्वत है। the Vedas are eternal. तो वेद तो शाश्वत नित्य है। But this Smriti, they were written, right? This is the realization of the sages. परंतु ऋषि मुनि भी जो साक्षात्कार है, स्मृति पुराण के रूप में रचना की गई, लिखे गए हैं बाद में। So all those Shruti, they are original. तो अब महाराज बता रहे हैं कि हालांकि देखा जाए तो श्रुति ओरिजिनल है, But that doesn't mean they are the best. परंतु इसका अर्थ यह नहीं होता है कि वे सर्वश्रेष्ठ हैं। I get the point? Like when Sukadeva Goswami was giving lecture, there were many elderly people, but he was the youngest. So being older doesn't mean that they were more advanced. जिस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी भागवत कहने लगे, उस समय कई वयोवृद्ध बड़े बड़े ऋषि मुनि वहां पर उपस्थित थे और उनकी दृष्टि से देखा जाए सुखदेव गोस्वामी बहुत कम उम्र के थे। तो कम उम्र के होने से ऐसा नहीं कि वो उनका ज्ञान कम था और जिनकी अधिक उम्र में उनका ज्ञान अधिक था। तो पुराने होने से कोई चीज श्रेष्ठ नहीं हो जाती है। So it doesn't mean that even if the Vedas, the Shrutis are oldest, it doesn't necessarily mean that they are the best. वेद शास्त्र पुरातन है, इसका यह नहीं होता कि वेद उत्कृष्ट और सर्वश्रेष्ठ है। So, yeah. So the Vedas, they are there, described, given by is original. Yeah, so the Shruti means heard, that has been heard, and Smriti means to remember. श्रुति मतलब जो सुनकर ग्रहण किया गया, स्मृति मतलब जिसको याद किया गया है। But what happened, the Vedas, Trigunya Visaya Veda, this Trigunya Bhavarjuna, the Vedas deal mainly with the three modes of material nature. भगवान श्री कृष्ण गीता में बताते हैं कि वास्तव में देखा जाए जो वेद है, प्रमुख रूप से तीन गुणों के अंतर्गत की चर्चा को ही वर्णन की है। यदा ते मोह कलिलम बुधिर व्यतितरिष्यति तदगंतासि निर्वेदम सुता सच्चा. This is very important verse. ये गीता का बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। So Krishna is telling Arjuna, he's saying that do not be carried away by the flowery words of the Vedas. और वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण गीता के द्वितीय अध्याय में कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, वेदों की अलंकारमयी भाषा से कृपया आकर्षित मत हो। You know the flowery words of the Vedas, what does that mean? वेदों की अलंकारमयी भाषा क्या होता है? Why it is comparing the Vedas, the words of the Vedas are like flower. Why? What does that mean? You know, a flower, it is beautiful to look at. तो पुष्पों से उनकी तुलना की गई है वेदों के शब्दों की, क्योंकि पुष्प जो होते हैं बाहर से दिखने में बहुत सुंदर प्रतीत होते हैं। Right? The aroma, smelling, beautiful. सुगंध होता है। But as you keep it on, what happened? It becomes dry, it becomes stale. परंतु कोई फूल होता है जिसमें सुगंध होती है, और आप उस फूल को अपने पास रखते हैं तो कुछ समय बाद वह मुरझाने लगता है और उसकी सुगंध भी जाने लगती है। So, and you don't want to look at the flower, right? Do you want to give a dry flower to somebody? यदि आप किसी को फूल देना चाहेंगे तो आप मुरझाया हुआ फूल देंगे किसी को। So the flowery words of the Vedas means that this karma kanda, all the results, all these benefits of this material world, in the beginning it is nice, it looks nice, but at the end they become dry, like the dry flower. तो इसका यह होता है कि जो वेदों में सकाम कर्मकांड आदि का वर्णन जो किया गया है, जो भौतिक लाभ और भौतिक प्रयोजन सिद्ध करने वाले हैं,
प्रारंभ में बहुत ही आकर्षक प्रतीत होते हैं, परंतु अंततः वे शुष्क और नश्वर रहते हैं। And he's saying, when your intelligence has passed out the dense forest of delusion, और वहाँ पर प्रकाश के नाटक से कहते हैं, जब तुम्हारी बुद्धि यह घने अंधकार में इस ज्ञान के वन को पार कर लेगी, and then you will become indifferent, sutta sacha. और जब तुम इसके परे उठोगे, तब वास्तविक तुम मुक्त होंगे। You will become indifferent to the Shruti. और फिर तुम इन वेदों के प्रति तुम्हें सहज उदासीनता आ जाएगी। Right? What has been said, Shruti, you will become indifferent to that. उनके प्रति औदासीन्य तुम्हें आ जाएगी। So now one more point is like, can we get Krishna through the Vedas? पुनः एक प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है, क्या वेदों के द्वारा श्री कृष्ण की प्राप्ति हो सकती है? नहीं हो सकती है, क्योंकि जैसे भगवद गीता में जैसे कुछ सिद्धांत है वो स्पष्ट रूप से बताया गया है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, वैसे सरल स्पष्ट रूप से सिद्धांत वेदों में स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया, इनडायरेक्टली बताया, अस्पष्ट रूप से बताया। यदि कोई आचार्य वो पूर्ण रूप से जो पढ़ने वाला व्यक्ति पूर्ण रूप से भगवान की शरण नहीं ले पाएगा। श्री प्राण को कहीं मान्यता है कि वेद पढ़ने वाला कृष्ण की शरण नहीं जा सकता है। हालांकि 15 अध्याय में लिखा हुआ पहले से सर्व काम एक वेद। नारायण को कह रहे हैं कि वेदों का तो सार ही कहा गया, वेदेश्वर हमें विद्या, तो वेदों के द्वारा ही कृष्ण को जाना जाता है। But yes, opposite now. एक और दूसरा खंडन कर रहा है, एक ऐसा वेदों का लक्ष्य कृष्ण है और दूसरा कह रहे हैं कि वेदों के द्वारा भी दुर्लभ है श्री कृष्ण को जाना। महाराज जी आपने कहा ना विभूति विषया वेदा, आपने आपने Ah, it looked very contradictory now. तीनों श्लोक घुमाए हैं, वेद त्रिगुण में ही है। Prabhu is saying, Vedasya Sarvar Aham Eva Veda, of the Vedas I am to be known. But he is saying, Durlabam, Durlabam, right? Vedesu, Durlabam. इसका वेद इससे दुर्लभ है, वेद से प्राप्ति में उनके कृष्ण ऐसा नहीं कहा है, वेदों से प्राप्त करना दुर्लभ। So Mahaprabhu's mercy, we are more focused on what? श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हम पद भ्रमित होने से बच गए। We are more focused on Srimad Bhagavatam, और right? महाप्रभु ने जो सभी वेद का सार श्रीमद् भागवत को बताया, तो भागवत का हम एकांतिक रूप से आश्रय लेते हैं। Not the Vedas. और वेदों की आवश्यकता भी नहीं रहती। So I want to give one example. एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा। Let's say you take the mango tree. जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया कि आम का वृक्ष होता है। So not during the season, out of season, there's just the trees there. जैसे जब ऋतु नहीं रहती आम की, तो ऋतु होने के बाद में केवल आम का वृक्ष मात्र है, अभी आम का फल नहीं है। Can you see the mango? क्या आप आम को स्वयं देख सकते हैं? नहीं। But the mangoes are there. The mango are there. आम वहाँ पर है, भले आपको दिखाई नहीं दे रहा। Yes, it's in the roots, in the leaves, and the flowers. It's not yet manifest. They are there. वहाँ पत्तों में, पुष्पों में आम है। Yes, because the mango doesn't fall from the sky. आम कोई आसमान से नहीं टपकता है, वृक्ष से ही वो प्रकट होता है। The mango comes from the tree. आम तो वृक्ष से आता है। But the mango is there. You don't see it. भले आप देख नहीं पा रहे, परंतु आम तो वहाँ पर है। So similarly, Krishna is there in the Vedas. उसी प्रकार से यहाँ पर ये दृष्टांत दिया गया है, श्री कृष्ण वेदों में है, परंतु देखना उसको सरल नहीं है उसमें। But we can't see him. वो आप उससे आप पहली बात है, आप देख नहीं सकते।
When can we see the mango? When the mango start appear, when the mango appears from the tree, then we can say, oh, this is a जब mango. प्रकट रूप से आम अपने आप को प्रकाशित करना प्रारंभ करता है वृक्ष में, तब आप उस आम को देख पाते हैं। In a tree, which is the best thing of the tree? वृक्ष का सबसे श्रेष्ठ कौन सा भाग होता है? Fruits. Not only fruits, the ripened fruits. एकदम पका हुआ फल है वो The सबसे best part of the tree is the ripened mango. जो पका हुआ आम है वही फल का सबसे श्रेष्ठ भाग होता है। So the Vedas, they are like desire tree. तो वेद जो है वो कल्प वृक्ष के समान है। So what is the best part of the tree? तो उस वृक्ष का सबसे श्रेष्ठ भाग कौन सा है? Ripened fruit of Vedic literature is Srimad Bhagavatam. तो समस्त वैदिक आम है जो कल्प वृक्ष के समान है, उसका सबसे परिपक्व फल है श्रीमद् भागवतम। Haribo. Haribo. Yes, when the Bhagavatam start appearing from the Vedas, that is in Nigama Kalpataro, right? This is the ripened fruit of all Vedic literature. Now, Nigama, this is Vedas, Kalpataro. Galitam, Phal. Galitam means galo wala, right? Pakka. Yeah. But here it is saying not eating, right? Drinking. Pibata means drink. Do you drink mango? यहाँ पर वेद निगम को वृक्ष कहा गया है और भागवत को परिपक्व फल कहा गया है, परंतु पके हुए फल को खाना नहीं है, पके हुए फल को पीना है। आपने कभी आम को पिया है? Yes. Now, why it is using the word piya means drinking? ये शब्द क्यों प्रयोग किया गया? पीने को क्यों कहा गया है? जब भी हम कोई रस को पीते हैं तो वो उस फल को या फिर वृक्षों को आस्वादनीय बन जाता है, आस्वादन करने लायक बन जाता है। पेड़ के पत्ते या फिर टहनियों को खाना कठिन है, लेकिन जो उसका सार है वो फल है, और फल का जो जूस है उससे पूरा पेड़ को हम समझ सकते हैं या फिर पेड़ का पूरा आस्वादन ले सकते हैं जूस द्वारा। फ्रूट्स खाने में उसका स्किन और सीड रहता है और जूस में कुछ भी नहीं, फल ऐसे Yes. कंप्लीटली Drinking would means when you say drink, when you eat something in a plate, something you leave aside, like the patta, curry patta and chili you don't eat, right? पीने के लिए क्यों कहा गया है? क्योंकि जब आप कुछ खाते हैं तो खाते समय उसमें कुछ कुछ चीजें आप छोड़ भी देते हो। कभी पत्ता होता है, कभी हरी मिर्च पसंद हो तो निकाल लेता है। But when it comes to drinking, drinking means you drink everything. पीना मतलब पूरा का पूरा पी जाते हैं, उसमें से त्याज्य कुछ नहीं रहता, त्यागने लायक कुछ भी नहीं रहता उसमें। Right? Eating, you don't curry patta, you don't eat chili, you don't eat, this, you don't, some spices, but you leave something aside. But when it comes to drinking, you drink the whole thing. तो ये एक भाव वहाँ पर बताया गया, खाने की जगह पीना क्यों कहा गया? क्योंकि भागवत में कुछ भी त्यागने लायक नहीं, भागवत पूर्णतः से ग्रहण करने योग्य है। This is Bhagavatam, take everything. Now, why this is Rasam Alayam? Rasmalai, right? That's why. Why it is not mentioned Rasgulla? What is the difference between Rasgulla and Rasmalai? रसमलाई और रसगुल्ले में क्या फर्क है बताइए? रसगुल्ला में जो सीरा रहता है, it is not the liquid, sugar liquid. Someone may take, but someone may not take. But जो रसमलाई में not single part can be used. Sometimes people they take the for Rasgulla they take the gulla but not the ras. For Rasgulla, sometimes devotees they take only the gulla. Ras they take it, they keep it. They don't drink. But for Rasmalai, you take the rasa and the malai. Right? So that's why it's compared to be rasam, alayam. Drink everything. So this is the ripened fruit of all Vedic literature, which is Srimad Bhagavatam.
यही महाप्रभु बता रहे कि श्रीमद् भागवत जो है सबसे परिपक्व फल है समस्त वैदिक शास्त्रों का। But there is harmony between Puranas and Vedas. There is harmony. परंतु साथ में यहाँ पर महत्वपूर्ण बात है कि वेदों और पुराणों में सामंजस्य और मेल भी है। It's like a tree. Somebody would see the roots, someone would be seeing the trunks, someone would be seeing the leaves, someone would be seeing the fruits from different direction. जिस प्रकार से वृक्ष होता है, वृक्ष की जड़ होती है, उसका तना होता है, उसकी शाखा, उसकी पत्ती होती है, और भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से भिन्न भिन्न वृक्ष के भाग को हम देखते हैं। But in the Vedas, the Upanishad is where spiritual life starts. Now you have what divided into four, right? Brahmanas, Aranakyas, no, Samhita. Samhita for the brahmacharis, Brahmanas for the grihasthas, Aranakyas for the vanaprasth, Upanishad for the sannyasis. So why Prabhupada translated one Upanishad? Sri Upanishad. Right? Because Upanishad means where now here renunciation, spiritual life starts. In Sri Upanishad, if you read it, Sri Upanishad, what is the first invocation? Om Purnamada Purnamina Purnadhichyate Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Right? I mean, the Upanishadic way of description of God, it is impersonal. The Lord walk, He doesn't walk, He's far away, He's near. This is a Upanishadic way of description of God. The Bhagavatam doesn't describe. Bhagavatam says, oh, He's Venum Kvanantam, His flute, His dress, like But if you see at the end of Sri Upanishad, I think from 15 sloka, they said, Hiranyamat Patrena, remove, my Lord, please remove this dazzling effulgence so that I will be able to see you. And please remember what I have done for you. This is bhakti. Explanation of bhakti is after the 15th verse, 16, 17 and 18. So the Lord is hidden in Vedas, but as we make progress into bhakti, and then one can see the personality of Godhead. So वेदों के अंदर भगवान गुह्य है, गोपनीय है, उन्हें जाना नहीं जा सकता सहजता से, परंतु जब भक्ति में प्रगति करते हैं, तो वेदों के द्वारा भी भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान को समझ सकते हैं. Yatha Devi Tatha Guru, that's there. And this is the essence of bhakti is there. Sista Vatara, Switas Vatara Upanishad. So there is the essence of bhakti is there also. तो भक्ति का जो सार है वहाँ भी वेदों में कहा गया है, वर्णित किया गया है. Krishna's name is not there. हालांकि भगवान श्री कृष्ण का नाम प्रकट रूप से वहाँ पर वर्णित न हो. You won't find Krishna Leela also there. श्री कृष्ण की लीला आपको वेदों में शायद दिखाई न दे. You will find only in Srimad Bhagavatam. तो कृष्ण का नाम, कृष्ण की रूप लीलाएं भागवत में प्रकाशित होती है. There is harmony because it is the organic whole, Vedas and the Puranas. तो ये सब मिलाकर संपूर्ण
बनता है वेद पुराण। But Vedanta means Vedanta, the conclusion of knowledge. परंतु वेदांत जो है, वेदांत तो ज्ञान का निष्कर्ष है, अंतिम सार है। Prabhupada, when he would be translating sometime in chapter 8, describing the Sat Chakra, how to develop this chakra, Krishna is saying in chapter 8. श्रील प्रभुपाद जी जब भगवद गीता के 6वें अध्याय का अनुवाद करते हैं, जहाँ पर 6 अलग चक्रों का वर्णन किया गया है। And Prabhupada is writing in a purport, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram. Somebody might tell, Prabhupada Swamiji, why are you writing Mahamantra? It's not written in the verse. तो कोई लोगों को प्रश्न आ सकता है कि श्रील प्रभुपाद जी, श्लोक में तो कोई हरे कृष्ण मंत्र नहीं लिखा है, वहाँ तो कुंडलिनी और चक्र के बारे में लिखा गया है, और श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में हरे कृष्ण मंत्र के बारे में कह रहे हैं। Prabhupada said, I can see, you can't see, you don't see, I can see, I know. जब वो भक्त पूछते हैं कि वो चक्र के वर्णन किया गया, वहाँ तो महामंत्र नहीं दिखाई नहीं दे रहा, प्रभुपाद कह रहे हैं मुझे वहाँ पर महामंत्र दिखाई दे रहा है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। What is Prabhupada doing? He's writing his purport according to conclusion. वास्तविक श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य मतलब पूरे वेदों का जो सार अंतिम निष्कर्ष है, प्रभुपाद अपने हर तात्पर्य में प्रकाशित किया। What is Prabhupada's name? भक्ति वेदांत। Bhakti Vedanta. That's why he's always writing the conclusion. तो श्रील प्रभुपाद का नाम ही भक्ति वेदांत है, तो वेदों का जो अंतिम निष्कर्ष भक्ति है, उन्हें प्रभुपाद ने अपने हर तात्पर्य में लिया है। So you can't defeat Prabhupada. आप प्रभुपाद जी को परास्त नहीं कर सकते। Everywhere you will find that he's writing, श्रील प्रभुपाद go to the conclusion. प्रभुपाद निष्कर्ष को देते हैं हर चर्चा में। In chapter 8, many places he would be writing, sometime in the purport, twice, 2 times he would be writing the Mahamantra. और आप भगवद गीता के 8वें अध्याय में देखते हैं, प्रभुपाद एक ही तात्पर्य में 2-2, 3-3 बार भी हरे कृष्ण महामंत्र को लिख रहे हैं। Because Krishna is saying, Vidashcha sarver aham. So that's the conclusion. तो भगवान श्री कृष्ण के वेदों का सार अंत मुझे जानना, तो वही निष्कर्ष कृष्ण प्रभुपाद के तात्पर्य में प्रकाशित किया गया है। Shri Prabhupada ke, Gaur Mahaprabhu ke, Nitai Gaur Premanande. So that was a little bit of discussion. Yeah. जैसे ऐसा बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन, Louder. No, louder. बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन दे भागवतम एंड वेदस सिमिलरिटी इन डिफरेंसेस, और जो निगम और कुतल ग्रंथ पर वो श्लोक का डिफरेंस बहुत सुंदर। मैं आज पहली बार सुना था इसको। तो मेरे पूछने के जैसे भागवत में कुछ सेक्शंस है, जैसे भागवतम कंप्लीट और उसमें हर श्लोक हर वर्ड भगवान रिप्रेजेंट करते हैं। भागवत में कुछ सेक्शन है जैसे कि हम पढ़ते हैं पुरंजन सेक्शन हो कि अग्निदर सेक्शन है, जो एक्चुअली उनको इतना रेस्पेक्ट अंदर होना चाहिए कि उनको ब्यूडरमेंट भी आ जाता है, कुछ फियर भी रहता है, आउट ऑफ फियर और ब्यूडरमेंट बिकॉज ऑफ हर जो कंडीशनिंग नेचर, जो चीज़ हम उसको समझ नहीं पाते और हम लिख भी नहीं पाते इतना लेवल में। तो हो सकता है कि यहाँ पे अपराध भी हो सकता है, और ऐसे भी समथिंग लाइक फेयरफुल टू रीड आउट दिस सेक्शंस। तो वो पॉइंट में हमारा जो डिवोशन रहता है, जो मतलब रेस्पेक्ट रहता है, वो नहीं रहता है, तो उससे हम कैसे बच सकते हैं? You understand? You want translation? Yeah. You say that Talking. in English. You have mentioned that everything is like there's nothing to reject. Everything Should be. Yeah. Like there's no gula. But sometimes when we study Bhagavatam, there are some sections. Yeah. We develop some kind of doubt, self-confusion, and different. Some descriptions are there, which we are not very much comfortable with. Yeah. It doesn't really directly involve bhakti. Yeah, I mean, yes, that's there. But they are all associated with Srimad Bhagavatam, so it must be exalted. So in what mode then we should study? It's like you find also, now Sukadeva Goswami, Maharaja is going to die in 7 days. भागवत में श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से कथा कह रहे हैं, जब परीक्षित महाराज की 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी।
And Sukadeva Goswami describing about these 28 types of hell. और वहाँ पर भी 3 दिन में ही परीक्षित महाराज मरने वाले हैं और सुखदेव गोस्वामी 27 प्रकार के नरकों का वर्णन कर रहे हैं। What does it have to do with somebody dying? अब इसका क्या संबंध है, क्या लेना देना है परीक्षित महाराज को नरक के वर्णन से? You know, but to get more support, importance to the positive, so the negative also is given. तो भगवान के सकारात्मक पहलू के प्रति और अधिक दृढ़ श्रद्धा और निष्ठा प्राप्त करने के लिए उस नकारात्मक पक्ष को भी वर्णित किया गया है। Get it? Even Hiranyakashipu is a demon, but every day we are singing his name. हालांकि देखा जाए हिरण्यकशिपु एक असुर है, परंतु हर रोज को उठते और ब्रह्म मुहूर्त में हिरण्यकशिपु का नाम लेते हैं। Hiranyakashipu Lakshaha, every day we are singing, right? और राक्षस से बढ़कर उसका नाम सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में गाया जाता है। Also, because among the audience, there were not only Vaishnava devotees, there were many also impersonalists, Mayavadis, yogis, all types. तो एक कारण ये बताया जाता है कि जब सुखदेव गोस्वामी भागवत कह रहे थे परीक्षित महाराज से, तो केवल परीक्षित महाराज ने अन्य कई तार्किक ज्ञानी लोग भी थे, इसलिए उस विषय को अलग पहलू से भी प्रकाशित किया गया। If you take the names of the politicians in the world now, you feel contaminated. यदि आज के वर्तमान के राजनीतिज्ञों का नेताओं का अगर आप नाम लेते तो आपका चित्त दूषित हो जाता है। But if you tell Hiranyakashipu, you don't feel contaminated, right? परंतु आजकल की बीजेपी कांग्रेस का नाम लेके आपका बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, तो हिरण्यकशिपु का नाम लेने से आपका मन अपवित्र नहीं होगा। Because it's an associate of Srimad Bhagavatam. क्योंकि वहाँ भागवत में उनके नाम का वर्णन किया गया है और भगवान के लीला में भाग लिए। There's one more question. Somebody was waiting down. श्री परमनाथ को किया था, तो आगे आकर समझे कि अगर श्रीमद् भागवत कभी पतिव्रत फल का जूस है, तो चैतन्य चरितामृत क्या है? Ah. Yes, it is said भागवत रसमलाई है, तो फिर चैतन्य चरितामृत क्या है? where Bhagavad Gita ends, Bhagavatam starts. Where Bhagavatam ends, Chaitanya Charitamrita starts. जहाँ गीता समाप्त होती है वहाँ पर भागवत प्रारंभ होता है, और जहाँ पर भागवत समाप्त होता है वहाँ पर चैतन्य चरितामृत प्रारंभ होता है। So it's an ending process. निष्कर्ष के निष्कर्ष का भी निष्कर्ष है। Anandam Buddhi Vardhanam, increasingly, Anandam Buddhi Vardhanam Pratipadam, Punamrita Svadanam. So, yes, Prabhupada said, what Prabhupada said? Postgraduate, CC is postgraduate book. तो ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है। Okay, so yes. Did Ishwar Puri really tell Mahaprabhu that you are full number one? Yeah. He is just making that up. Yeah, I mean, we are Kali Yuga people. He's making a statement, but for all of us also, who can understand Vedanta in this life? Difficult. चैतन्य महाप्रभु सही में ईश्वर पुरी ने मूल कहा था कि चैतन्य महाप्रभु ऐसी बातें बना देते हैं, तो ऐसी बात तो नहीं बना देते, उनको कहा भी था, परंतु श्री चैतन्य महाप्रभु जन साधारण की शिक्षा देने के लिए कि किस तरह से वास्तविक कली काल के जीव वेद को पढ़े अधिकारी नहीं है, वो बताते हैं। Yes. When you do bhakti, the heart melts. भक्ति के अनुसार फिर हृदय द्रवित होता है। Study Vedanta, you become kathor. You become? Kathor. अधिक वेद का पाठ करने से, भक्ति का अभ्यास करने से हृदय कोमल होता है, और वेद का पाठ करने से हृदय कठोर होता है। You become dry. और आपका हृदय शुष्क हो जाता है। Right? Philosophy. There's no devotion, just dry philosophy. But devotional service, spiritual knowledge, what does it do?
makes you humble. तो वेद से कभी कभी अहम आ जाता है, परंतु भक्ति के ज्ञान से व्यक्ति नम्र हो जाता है. And we'll find in many cases, I mean in Tukaram also, Tukaram, he was not born from the Brahmanical family, but he was rejected by the Brahmanas. तो ऐसे कई भक्तों के चरित्र लिखते हैं. तुकाराम महाराज भी कहा जाता है ब्राह्मण परिवार से थे, ब्राह्मणों का तिरस्कार किया था. But so much devotion. परंतु उन भक्ति के सबसे उच्च लक्षणों को प्रकाशित किए तुकाराम महाराज. Was a melting heart. और उनके शब्दों से हृदय द्रवित हुए. And that's what Krishna is attracted by. और भक्ति ही श्री कृष्ण को आकर्षित करती है. Krishna prefers the chastisement of Yasoda than the glorification of the Vedas. यहाँ तक वर्णन किया गया कि माता यशोदा की डांट को श्री कृष्ण अधिक पसंद करते हैं वेदों में लिखी स्तुति से. Right? तो फिर हमारा हृदय कोमल करने के लिए हमें निगम कल्पतरु बताया गया. और एक जगह पे ये भी कहा कि सिद्धांत को दिया तुम्हें ना करो चित्त आलस. Siddhanta? बोलिए तुम ना करो चित्त आलस. सिद्धांत जानने में या तो ज्ञान जानने में समझने में आलस मत करो. तो फिर क्या, और केवल वेदांत का अध्ययन करेंगे तो हृदय कठोर होगा. तो क्या हमें दोनों भी करना चाहिए? एक तरफ से क्या सिद्धांत? Okay, I understood. There is harmony between jnana and bhakti. ज्ञान और भक्ति में सामंजस्य है. Bhakti is independent. भक्ति पूर्ण रूप से स्वतंत्र है. Bhakti does not depend on jnana. भक्ति ज्ञान पर निर्भर नहीं करती है. And they are not interdependent. और एक No. दूसरे पर पूर्ण निर्भर नहीं है. Some will say they are interdependent, but they are not interdependent. तो वास्तविक वे एक दूसरे पर निर्भर नहीं है. Bhakti is its own authority. Bhakti is its own authority. भक्ति स्वयं अपनी अधिकारी है. Right? Bhakti doesn't depend on karma and jnana. भक्ति But कर्म ज्ञान आदि पर निर्भर नहीं है. Karma and jnana to become complete depends on bhakti. परंतु कर्म ज्ञान भक्ति पर निर्भर करते हैं. भक्ति पूर्ण रूप में स्वतंत्र है. So, one example is given that we see Mrigari became such a great soul उदाहरण के लिए मृगारी कैसे बड़े महात्मा बने without study. और वे अध्ययन नहीं किए. Just like that, he became such a great devotee without jnana. The gopis of Vrindavan, they did not go to school, they were not erudite, but they have shown the highest love of Godhead. गोपियाँ भी कोई ऐसी वेद की पाठशाला में नहीं गई थी, परंतु उन्होंने भक्ति के और शास्त्र के सबसे उच्च निष्कर्ष को प्रकाशित किया. Karma, jnana, astanga yoga, they all depend on bhakti. जो समस्त कर्म ज्ञान जितने भाग हैं सबके सब भक्ति पर निर्भर करते हैं. भक्ति पर निर्भर नहीं करते. And they all supposed to be culminating to bhakti. और जितने भी अलग साधन हैं अंततः उनका निष्कर्ष भक्ति में ही पूर्ण होता है. Krishna spoke about karma yoga in Gita, right? And jnana yoga and astanga yoga. कृष्ण कर्म योग ज्ञान और अष्टांग योग के विषय वर्णन करते हैं. But at the end he says, bhaktyamam abhijanati. It's like you're sitting for the exam, okay? Let's say you're sitting for the exam. तो ऐसे कोई व्यक्ति परीक्षा दे रहा है. Right? You're sitting, your paper has come in और front of आपके you. सामने प्रश्न पत्र आए हुए हैं. Students, right? Without reading the whole thing, you start writing the answer. बिना प्रश्न पत्र को पढ़े आप उत्तर लिखना शुरू कर देते हैं. You did not read the niyam, the instructions, you did not read anything. You just start writing the answer. तो क्या क्या नियम है परीक्षा के वो सब आप पढ़ते नहीं, सीधा आप उत्तर पत्र लिखना शुरू कर देते हैं. And there are 30 questions. और 30 प्रश्न वहाँ पर भी. And you're writing the answer of all the questions. But at the end it is said, do not write anything, just write your name and give it back.
At the end, आखिरी में लिखा है yeah, there is a point that is what is written at the end. Do not write anything, just write your name and give it back. वहाँ पे आखिरी में लिखा गया था कुछ मत लिखिए अपना नाम लिखिए और इस पेपर लौटाइए Fail, right? So similarly, Krishna is talking about karma yoga, jnana yoga, astanga yoga, and at the end said, not all these yogas, it is bhakti yoga. भगवान एक दुनिया भर की बातें होते हैं आपने कहा कि भक्ति योग सार है Yes, right. So we can't defeat that. Krishna himself is saying, bhakti only through bhakti you'll understand me. There's no other way. Thank you. महाराज जी, जब हम नाम जप करते हैं तो भगवान के अवतार अलग अलग अवतार वो तो हम थोड़ा सा समझ पाते हैं पर हमने सुना कि कली काले नाम रूपी कृष्ण होता है कलयुग में कृष्ण ही नाम के रूप में अवतरित हुए तो वो रियलाइज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है चैंटिंग करते समय कि वास्तव में नाम ही कृष्ण है तो ऐसे What is the point you want to make? We know about other incarnations of Krishna Yeah. but the same question yesterday evening it was asked it's difficult to realize Krishna his name कली काले नाम रूपी कृष्ण Okay. this incarnation is difficult to realize Mahaprabhu. no name Names. holy name I mean, all shastras glorifying the names. Even Prahlad Maharaj. What is Prahlad Maharaj realize saying? the holy name Yeah, Prahlad Maharaj is saying Shravanam. Kirtanam is there. What Bhagavad Gita? Kalordo se Nidhirajan Astihi ko Mahan Guna. What is that? Kirtanad eva Krishnasya Mukta Sangha Param Raja. So Shastra is revealing every word that is mentioning. पूरा शास्त्र भरा पड़ा है नाम की महिमा से Sinvata Swakatha Krishna Punya Sravana Kirtanam. Everywhere is Kirtanam. Glorification of the Lord, names of the Lord. Yeah. he's asking how to realize holy name That's the question? हाँ हाँ भगवान के विभिन्न अवतारों को तो हम समझ पाते हैं we can understand other incarnations of the Lord Yeah. but in Kali Yuga they say that holy name is the incarnation but we are chanting but we are not realizing Okay. the same question yesterday The same question, yeah. Yesterday was saying how Mataji was asking yesterday. Jabara Mataji. Yes, but we can see Prabhupada said by the result, the pudding, the taste of the pudding is released by eating, right? तो कल भी प्रश्न पूछा गया था तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं जैसे In the pudding, the taste of the pudding is in the eating. The taste. आस्वादन करने के लिए खाने के बाद ही आस्वादन खाने के बाद इसका आस्वादन होगा ऐसा है Just imagine what is the reason that we are sitting here? तो क्या करना है आप यहाँ पे बैठे इसका क्या परिणाम हो रहा है What is the cause? It's a holy name. जो परिणाम है जो आप सभी It's great transformation in our hearts. तो कल भी ऐसे कहा था महाराज जी ने कि जो संसार में परिणाम हम चारों तरफ देख रहे हैं उससे समझ में आ सकता है कि हरिनाम कैसे कार्य करता है Otherwise, we'll be in the shop, we'll be in the casino or the somewhere else. तो आप सभी हरिनाम का उच्चारण किया उसके परिणाम में कि आप यहाँ तक पहुँचे हैं अन्यथा आप कहीं पर डिस्को डांस की दुकान होटल में होते क्लब में होते Many people are following dharma, but they're following dharma from the external. But the essence of dharma, the sar, dharma sar, that they don't know. Nama ruchi, jivedaya, nama ruchi. This is the sar, the essence of dharma.
So that's mentioned everywhere. To realize it, we have come to ISKCON. Prabhupada is actually has distributed this holy name all over the world, and we can see how many people are getting changed all over the world. The Hindus, they have been chanting different mantras, different Gayatri mantras. Still, there is no transformation, because dharma means transformation of the heart, right? तो भगवान का नाम का जो परिणाम है, इससे हम भगवान के नाम की महिमा और विश्वास जागृत हो सकता है। श्रील प्रभुपाद ने संपूर्ण जगत में हरिनाम को दिया, लोगों में कितना बड़ा परिवर्तन है। भारत में कई लोग दुनिया भर के मंत्र कह रहे होंगे, गायत्री मंत्र आदि, परंतु किसी में ऐसा परिवर्तन नहीं आया जैसा हरिनाम का उच्चारण करके संपूर्ण जगत में परिवर्तन और क्रांति दिखी गई है। Dharma is not something that you once a time you follow. Dharma means it is Sanatan. Sanatan Dharma. Your life is transformed. You follow up Sanatan Dharma. वास्तविक जो धर्म है, शाश्वत धर्म कोई किसी काल के लिए नहीं होता, तो ऐसे सही धर्म का अगर आप पालन करते हैं तो आप में परिवर्तन देखा जाता है। You know why Prabhupada said it? He sometimes Prabhupada's translation of Sanskrit word, it puzzle, or people become amazed about the translation. शिल प्रभुपाद जी के विशेष गुण है कि शिल प्रभुपाद जी के शास्त्रों के संस्कृत शब्दों का अनुवाद करके भी लोगों को विस्मित कर देता था। For example, bhakti. How did Prabhupada transform bhakti? Translated bhakti. Not only devotion, but devotional service. Means service has to be there. तो हम देखते हैं शिल प्रभुपाद की जो भक्ति पर जो व्याख्या होती थी शास्त्रों की, तो भक्ति शब्द संस्कृत होता है, उसका जब प्रभुपाद अनुवाद करते थे तो प्रभुपाद लिखते थे भक्ति में सेवा। So what is the translation of Bhagavan in English? Prabhupada translation. Prabhupada's translation. Supreme Personality Godhead. All these three words are very powerful. Godhead means many things. Okay, Godhead. Oh, back to Godhead, spiritual world. There are many gods also. There are many gods, right? Many demigods are there. Many controllers. But they are not supreme. So this one, Krishna, is supreme among all the God. That's to make us understand. And not only that, he has a personality also. So this has never been translated like that before. Personality, supreme personality of Godhead. That's why Krishna is saying, Janma karma chame divyam evam yoveti. Why this word? Tattvataha. So one will understand him in tattva, according to the real tattva. Many people understand, they try to understand God in their own way, their own mind. In understanding Krishna tattvata, in tattva, that is rare. And without the mercy, without the explanation, understanding of Sri Chaitanya Mahaprabhu, no one will be able to understand Krishna as he is. Right? What is the conclusion of when Mahaprabhu said, Aradhyo Vrajesa Tanes Taddama Vrindavanam. Aradhyo, highest worship, not even, he's not saying Krishna, he's saying Vrajesa Tanaya, the son of Nanda Maharaj. The way the gopis worship him in Vrindavan. You know?
Without Mahaprabhu's teaching, it is not possible to understand God. और चैतन्य महापुरुष शिक्षा को ठीक से नहीं समझेगा तो वास्तविक कृष्ण की तत्व को पूर्णतः जानना संभव नहीं है। Hare Krishna. हरे कृष्णा। Sri Chaitanya Mahaprabhu ke, Shri Prabhupada ke, Nitai Gaur Bhimanande